हाय गाइस, डीप टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है. वेलकम टू डीप टॉक. आई हैव टुडे विद मी अ वंडरफुल गेस्ट, द co-founder of Noise, which is one of India's biggest wearables company. In fact, one of the world's biggest wearables company now. 2000 crore plus turnover targeted for 2023. This is Amit Khatri with me. Hi Amit. Hi Chetan, thank you for having me here and for such a wonderful introduction. अमित, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे नॉइज़ के बारे में मतलब आई न्यू नॉइज़ कंपनी, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी फास्ट ग्रोथ है और इतनी सेल्फ मेड कंपनी है. आई डिड नॉट नो. एंड मैंने जब भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं हम उनकी रिसर्च करते हैं, हम उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखते हैं और उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं. ये मेरे पास एक लिस्ट है, मेरी टीम ने मुझे बना के दी है कि भाई ये क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं. तो अमित खत्री ऑफ नॉइज़ डजंट मेक सो मच नॉइज. आपके इतने हैं ही नहीं. ढूंढे मैंने जा जाके कि ये है एक गंदे से रेजोल्यूशन में कोई ऐसे बोल रहे हो जूम कॉल के अंदर थोड़ा बहुत. मैं कहा यार ये बंदा नॉइज नाम की कंपनी है पर खुद कोई नॉइज ही नहीं मचाता. तो हम लोग थोड़ा सा काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो वर्क होना चाहिए ना नॉइज. नहीं यार, आई थिंक वर्क कीप्स अस वेरी मच ऑक्यूपाइड एंड द काइंड ऑफ स्पेस वी आर इन, इट्स एट अ हाइपर ग्रोथ. हाइपर ग्रोथ है. मतलब अगर लोगों को बताना चाहिए, मैं इसलिए आपको लाया हूँ कि यू नो आई वुड से, एंड आई मीन अमित वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग इंडियन बॉय, करेक्ट. और ना अमित के पास कोई ऐसे IIT IIM के टैग्स हैं, करेक्ट, ठीक है. ना आपके लाइक आपके पापा एक बैंक में काम करते थे, करेक्ट, पर उन्होंने लूटा तो नहीं बैंक. तो मतलब इतने पैसे तो थे नहीं उनके पास, है ना वो ओन करते थे बैंक, है ना. तो और वो सब हम जाएंगे. एंड ना आपका कोई ऐसे बैकग्राउंड है जो आज वेरिएबल्स में आपकी ये वॉच है, फिटनेस वॉच आपने पहनी हुई है गाइस, द वन ही इज़ वेयरिंग, इट्स फैंटास्टिक. पर एनीवे, सो यू नो ही इज़ नॉट इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गाइस, ही इज़ नॉट इवन एन इंजीनियर. क्योंकि आपको पता है एनीवे इंजीनियर तो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं, पर ही इज़ नॉट इवन एन इंजीनियर. एंड नाउ ही इज़ बेसिकली, आई वुड से नॉइज इज़ अ टेक कंपनी, राइट. नॉइज इज़ टेक कंपनी, हार्डवेयर, ही इज़ इन हार्डवेयर. यू नो व्हाट ही स्टडीड? फैशन. एक्चुअली मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इनकी कहानी इन्हीं के मुंह से आपसे आज बात करके बताऊंगा, ताकि अगर अमित खत्री कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. आई एम फैसिनेटेड बाय योर जर्नी, सो लेट्स गो इनटू इट. सो अमित खत्री का जन्म, ऐसे अगर हम पिक्चर बना रहे हो, पहला शॉट है, ऐसे तूफानी रात है और बच्चे का जन्म हुआ है, मुबारक हो, लड़का हुआ है. तो कौन से शहर में, कौन से अस्पताल में जन्म हुआ, वहाँ तक जाते हैं हम. नहीं, अस्पताल का तो शायद आई एम श्योर इट वुड बी सम सरकारी अस्पताल ओनली in 1981. In which country? So I come from a very small town in Rajasthan called बीकानेर. So बीकानेर मुझे लगता है सब जानते हैं. सर बीकानेर तो भुजिया की वजह से स्मॉल रहा ही नहीं. So वो every corner shop किसी भी शहर में इस बीकानेर मिष्ठान और नमकीन और whatever. I was never great at studies. The first rank तो मैंने लाइफ में नहीं देखी. तो फिर आपने स्कूल किया, आपने कहा आपके do you remember how many marks you got in 10th or 12th? यार 10th में तो वो I just उस समय फर्स्ट डिवीजन हुआ करता था, तो मे बी यू कुड हैव बीन 80-90 परसेंट, बट हम लोग फर्स्ट डिवीजन वाले थे, तो हमारे फर्स्ट डिवीजन थी. फर्स्ट डिवीजन आ जाना, जिनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो वो फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं. 61-62 भी ठीक है, बट फर्स्ट आ जाना. हाँ, सेकंड थर्ड में. ओके, सो इट वाज दैट एरा. एंड देन एंड सो दिस वाज स्टेट बोर्ड. स्टेट, नो आई डिड फ्रॉम स्टेट बोर्ड. ओके, एंड देन सो यार 10th तक तो आई थिंक लाइफ वाज लाइक दिस. नहीं, तो लोगों ने जब जैसे 10th में मार्क्स आते हैं तो एक ठप्पा लग जाता है आप पे, तो सब घर वाले, रिश्तेदार, मामा जी, चाचा जी सब बोलते हैं कि अब ये क्या करेगा लड़का. तो एक डिसीजन होता है. तो आपको किस कैटेगरी में डाला गया था? ब्रिलियंट बच्चा है, कुछ एवरेज बच्चा है, लोअर बच्चा, क्या है? नहीं देखो, बच्चा तो ब्राइट था, तो सबको लगता था कुछ करना चाहिए. आई वाज द एल्डेस्ट वन इन माय फैमिली. सो चाचा ताऊ सब में, मतलब चाचा सब में, तो आई वाज द एल्डेस्ट वन. सो सब पे प्रेशर था कुछ करना चाहिए. और फर्स्ट डिवीजन आ गया, चलो क्लियर. फर्स्ट आ गया तो मेडिकल इंजीनियरिंग करा दो, सेकंड आ गया तो कॉमर्स करा दो, और थर्ड आ गया तो नल आ गया तो आर्ट्स दिला दो. व्हिच इज वेरी बैड बिकॉज नाउ आई एम इन द आर्ट्स, राइटिंग एंड ऑल इज आर्ट्स, एंड इट्स लाइक व्हाई इज इट लाइक दैट यार. आर्ट्स भी दिमाग लगता है करने में, ऐसा थोड़ा है. तो आपने मतलब मेडिकल की तैयारी चालू की 11th-12th में? मैंने 11th-12th में मेडिकल की तैयारी चालू कर दी, बट वो ऐसी तैयारी थी कि मैं आई वाज नॉट एंजॉइंग दैट एट ऑल. एंड आप आयरनी देखिए क्या हुई कि सब लोग वहाँ से कोटा जा रहे थे. राजस्थान में कोटा इज नोन फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, एंड आई थिंक एलन इंस्टीट्यूट वाज द नेम दैट टाइम. आई थिंक I was sent to Kota also for that. तो आप कोटा भी गए हो? कोटा भी गया हूँ मैं. कोटा, I went to Kota to prepare medical exam and. नहीं, in 11th only or 12th? नहीं, मैं 12th के बाद गया. मतलब आपका नहीं हुआ 12th के बाद? मेरे 12th के बाद नहीं हुआ medical. So that was your first if I can say first attempt. And if I would say the first big failure
इन अ वे? मैं फेलियर तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा था फेलियर, या बट या आई कुडंट क्लियर दैट मतलब एग्जाम. यू दैट वाज बिकॉज अभी तक मुझे कोई आसार नहीं लग रहा 2000 करोड़ की कंपनी बनाएगा ये लड़का. ये मतलब अगर failure कोई है. बोले कि बेट करो कि ये लड़का रंगीला देखता है क्लास 7 में और उसके बाद 12th के बाद इसने मेडिकल की तैयारी करी उसमें भी नहीं हुआ, तो ऐसे मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा. यस. सो 12th के बाद आपका नहीं हुआ, फिर आपके मम्मी पापा ने कहा कोटा जाना है या आपने कहा कि मैंने जाना? नहीं वो इट वाज इन द एयर. मोमेंटम. मतलब कोटा भेज दो शायद वहाँ जाके. एंड वो राजस्थान में एक्चुअली इट कांट बी दैट फार फ्रॉम बीकानेर कोटा. 5-6-7 घंटे. हाँ. ओवरनाइट जर्नी इज नॉट दैट बैड. सो इट वाज इन द एयर कि ठीक है वहाँ जाके बेटा पढ़ाई कर लेगा. हाँ. सो मैं वहाँ गया चेतन, एंड ट्रस्ट मी आई गॉट शॉक्ड द वे इट वाज हैपनिंग. इट वाज लाइक भेड़ चाल बोलते हैं ना, 500 बच्चे लगे हुए हैं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं. एंड इंजीनियरिंग इज स्टिल आई फील इट्स मोर इंटेलेक्ट. आई शुड नॉट बी सेइंग इट. मेडिकल में यू हैव टू जस्ट इससे क्या होता है इससे क्या होता है कीप रटना पड़ता था बहुत. एंड आई वाज नेवर यूज्ड टू एंजॉय इट, एंड इट वाज भेड़ चाल. तो मेडिकल का आया कैसे था आइडिया कि मैंने डॉक्टर बनना है? अब मैं कोई भी मेरे को डॉक्टर के आसार लग नहीं रहे. नहीं मेरे में नहीं थे, बट वो छोटे शहर में क्या होता है आपके कोई चाचा मामा ताऊ कोई ना कोई डॉक्टर होता है तो वही होता है डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ. सो दैट्स आई वाज थ्रोन इनटू इट. एंड सेकंड टाइम भी मैंने अटेम्प्ट करा बट मेरा नहीं हुआ वहाँ. फिर नहीं हुआ. सो आप कोटा में 1 साल लगाया, क्या करते थे आप? मतलब ऑब्वियसली पढ़ नहीं रहे थे इतना, तो प्रेशर में जी रहे थे ज़्यादा ऑनेस्टली. मतलब एवरीबडी वाज स्टडीइंग एंड आई वाज नॉट. how would you pass your time? Video games? What? वीडियो गेम्स तो उस समय चेतन होते नहीं थे. मतलब आई मीन कुछ ना कुछ थोड़ा ही पढ़ते थे, थोड़ा फन कर लिया, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा कर लिया. क्लास में बैठे हैं तो पीछे बैठे हैं तो लास्ट सीट पे व्हाट यू डू, यू जस्ट प्ले विद योर फ्रेंड्स अराउंड. हाँ. So that's how my life was there. And But you were not worried about your future then? You were like कि ठीक है, are you that kind of a person कि देखी जाएगी यार अभी आज है आज का दिन चेतन है? थोड़ा सा वरी होने लग गया था बिकॉज आप 12th कर लेते हो, फिर होता क्या है कि कुछ निकलने लग जाते हैं लोग. सो देयर वर फ्यू फ्रेंड्स हु हैव गॉन इनटू मेडिकल और इंजीनियरिंग, निकल चुके थे कुछ लोग, तो वो प्रेशर बिल्ड अप होना चालू हो गया था. इस सब में किसी भी स्टेज पे आपको लगता था यार एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा? ऑनेस्टली नॉट. बिकॉज कितना सपना था, क्या हो जाएगा मेरा? मतलब आपको लगता है जॉब लग जाए या क्या, कैसे? उस समय तो यही था कि कोई अच्छी जॉब लग जाए. एंड फॉर मी इट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी अ रेप्यूटेटेड थिंग व्हाटएवर आई डू. इट शुड नॉट बी एनी जॉब, इट हैज टू बी अ गुड वन फॉर मी. हाँ. सो बस इतना ही था. मतलब इसके बियॉन्ड कोई एंटरप्रेन्योरशिप का या मेरी फैमिली में कोई बिजनेस में था ही नहीं, तो इट्स ऑल सर्विस. सो आप समझिए कि पेरेंट्स के फ्रेंड्स कौन होंगे जो जॉब में होंगे, तो फिर उनसे भी आप क्या सीखते हैं? आप यही सीखते हैं. इट वाज लाइक गेट अ गुड जॉब एंड थोड़ा सा पढ़ाई वाला एटमॉस्फेयर था, तो गेट अ गुड वेल क्वालिफाइड जॉब. बस दैट वाज समथिंग आई हैव ऑलवेज लुक फॉर. सो यू फेल्ट यू नॉट गुड एट स्टडीज, सो IIM वगैरह तो नहीं, बट कैट दे देता हूँ कि शायद कहीं कुछ हो जाए. कैट में tier 2 colleges was obviously then योर टारगेट. So what was your target college at that time जब आप कैट की तैयारी मैं क्या सिम्बी वगैरह में अगर हो जाता है, it's a good one for me. So you wanted to aim for सिम्बी. That we सिम्बी से चले जाऊँ, उसके बाद मेरी कहीं जॉब लग जाएगी, एशियन पेंट्स ये वो कुछ अदर. लड़का खुश है, HR कर रहा है अपना. मतलब I think सिम्बी और whatever नारसी मोंजी, सिम्बी whatever those. हाँ मतलब समझ गया that bracket of. That bracket. So IIM never came in the list. एंड इंटरेस्टिंगली दोस्तों ने एक निफ्ट का कॉलेज का फॉर्म भरा दिया कि यार दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. यार फैशन. ओके. सो I also thought it's fashion, but they also have a course which is into fashion management. It's similar to an MBA but more specialized in fashion actually, fashion space. So मैं कहा 90 सीट्स इसमें, वो तुम वहाँ तो भर नहीं रहे, 90 में क्यों कर रहे हो? तो I got फॉर्म भर दिया. Anyways फॉर्म भरने में क्या जाता था? Okay, that's a separate exam. That is no, I think CAT से लिंक था. Separate था, sorry. That time it was separate. They didn't take CAT. So एग्जाम देने में तो it was okay, दे देते हैं, फॉर्म ही तो भरना है, 10 भर दो, एक तो आ जाएगा. And then when the results came in, I think you'll be surprised, I got selected nowhere. And NIFT was a campus. I got a call for GDPI. Okay, so you did not get symbiosis. You did not get Narsi Mohanji. Yeah. I'm just telling you. अभी नहीं हुआ. I mean, let's just face it. So failure. You are smiling. Were you smiling then? Not really, because that was a very stressful moment that time, because you are not getting selected and honestly your friends are moving on in life. So honestly, you know, NIFT was really a little bit of a turning point in my career, because I started realizing थोड़ा सा एक stability आ गई लाइफ में कि अब कॉलेज है, जॉब भी लगी जाएगी, एंड अच्छा कॉलेज है, इट्स वेल नोन, एंड NIFT इज one of the best institutes in fashion if you ask me. Yeah. So वो well known था, so that life got sorted कि ठीक है यहाँ से जॉब तो लगी जाएगी.
So and then okay, so you had fun. You learned something in that MBA? So NIF was a very interesting journey for me. First of all, it gave a design inclination to me. I mean, when you're working with designers around, so आपका एक basic aesthetic sense level up हो जाता है. And थोड़ा सा you start believing in differentiation. How do people perceive design? First that happened, and second, again, I was a backbencher in college. I never used to enjoy subjects which are theoretical there, and so my again focus was कि attendance लगाने class में जाता था, but I was good at practical subjects in college. And besides work, I started picking up. So my pocket money was very limited, Chetan, that time. How much? I think 3,000 rupees a month my dad used to give me. So there was more freedom, but he took a loan, by the way, to send me to government college also. The fees. Okay. I think the fees was not much there, but still he took a loan. He had to take a loan to send me there. So pocket monies were limited. So our breakfast used to be like maybe a chai and Parle Ji ka biscuit, because there's the cheapest option you can have. But there were Delhi kids who were well paid off from their parents, and especially NIFT mein, I know many like these rich families, kids come to do fashion and all that. So we needed always more monies to earn a better living there, and I started picking up projects there. College में कोई भी fest हो रहा है उसके लिए merchandise चाहिए, तो I started picking up sourcing merchandise, getting it printed and selling to college people. Oh, and since so you opened a little business there. That's what it started. That's your first business. That started from there. So I started doing that. But these ideas कि चलो हम हैदराबाद में हैं, like so many people go to NIFT, but to think कि हम हैदराबाद में हैं, अच्छा यहाँ पे इन्फोसिस है, अच्छा यहाँ पे ये है, इनके लिए हम टी-शर्ट बना सकते हैं. How is this? Does this kind of come naturally to you? Like जहाँ भी आप जाते हो कि यार ये यहाँ पे डिमांड है. So मुझे actually NIFT में जाने का realize हुआ कि I'm good at these things. It naturally started coming in me because honestly there was freedom now. Till 12th or graduation you are doing nothing. You have to clear off your exams. So यहाँ पे and college also give you a lot of freedom to do, because you have to go for industry projects. You have to meet more people. A lot of people from outside are coming to college. So you make connects with them, and then I started picking up ideas from them. Okay. So how much like this was a business? Like this sounds like a pretty big business. Or नहीं यार चेतन, उस समय अगर if you make maybe 10-15,000 out of a deal, which is good because it covers up a lot of your additional expenses there in Hyderabad. And capital, like how would you get the capital to like make these t-shirts or whatever? I mean, you just borrow from friends, like give me 5,000, give me 5,000, give me 5,000. I'll return back to you in maybe 2 weeks. It's small projects. These were not bigger ones, but small projects we used to do. Wow. But till now, you never thought you're going to be this big company owner one day? Never thought. That drive was there, and so Gaurav, my co-founder, he's my Bhua's son. So he was 19 when he went for commercial pilot training, and when he came back, that market doomed. That was time of Jet Airways, I think. Okay. Bad time. Jet Airways, Air Deccan. And he had a knack for technology. I also wanted to do something B2C. And we saw that there is a transformation which is happening in terms of consumer life, where mobile phone is taking a toll on everybody. मतलब phone का time आ रहा है. And लोगों के पास options नहीं थे उस समय ज़्यादा. मतलब if we had to buy from overseas. मैं जाता था, मुझे बोलता था गौरव कि आप लेके आना मेरे लिए वहाँ से. Then we realized कि it is high time we should test something on our own. And what we could do, so we realized that gadgets you can't think at the time, because it's a game of big boys. You have to fight with Blackberries, for an example, or Nokia, Blackberries that time. So we can't even think. You can't imagine fighting them. So, but we found a gap that mobile covers is a very bland area where people want their devices to look good, and this is the area which should go up. So you opened a mobile cover company. We started mobile, Noise. Then we incepted Noise. That is Noise. Ka pehla product was mobile covers. So we started designing. Which phones were you making covers for then? Nokias? No. We used to. It was a Xiaomi time in India. Okay. So we started making it for Xiaomi. And Chetan, जब गौरव और मैंने बैठ के विजन करी कि क्या करना चाहिए नॉइज में हमें, तो we realized कि यार अगर मे बी 25 लाख का साल में बिजनेस हो गया, it would be a good thing for us. So that's how. 25 lakhs was your target. That's what we thought, कि we'll sell 50 covers. We won't believe, when we got in 50 covers, it got sold out in 2 minutes. Wow. Then we said, okay, let's get. How did you sell these covers? दुकान थी? No. So interestingly, Gaurav come from that era where he was very young, so very fascinated towards new age.
So that time Flipkart was there. Flipkart and Snapdeal time was there. So we started working with those guys very closely. Okay. So that was your first. So you basically ran a marketplace. Yeah, we were a और बिक गए आपके फटाफट. big guy. मोबाइल कवर से आई एम गोना कम टू दैट लाइक मेकिंग headphones and watches and all is a completely mobile covers is just like a wallet एक तरह से it's like a accessory, it's like a fashion accessory. Yeah, it's not very different. And is there money in mobile covers? Because I'm imagining it's very like unbranded and like a very. So when we started, we were the early ones. So we found a gap in the market, and we were fascinated by it because everybody wanted to flaunt their mobile covers. So cover was a good accessory that time. But in 2 years' time, we realized that it's getting very flat as a market because ASPs are dipping and very unorganized market. And then we realized that it is time for us to pivot to broader categories which are bigger. And when we were used to think ourselves like an ant in the ocean where there is these bigger guys or elephant and how do you fight? But with mobile se hame kya hua ki we led the market by the way 2 years. We were leaders in the market. Okay. I mean, but just the covers. So you did become very big in that. I mean, at the time, I think a company reached a turnover of maybe 24 crores, but it became flat. Yeah. Okay. But how did you get to 24 crores? That I mean, आप कह रहे हो 50 कवर बेचे, 25 लाख का टारगेट था. I agree 24 is nothing compared to the 2000 you have now, but वो 24 भी कैसे हुआ? I mean, as organization, we were very nimble and agile. I mean, this mobile covers, we used to follow trend. We had a knack for consumer. क्या चाहिए उसको? So, it's from 50, it went to 500 and 5. Maybe it was first year was not maybe 24. First year would be 4 or 5 or something like that. But tell me something. ये तो एक आपको knack था कि कवर कौन सा चाहिए, कंज्यूमर आप समझ गए. पर एक कंपनी चलाने में बहुत चीज़ें होती हैं. कवर बनते हैं, आते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, the whole shipments, कुरियर करना सामान जो आप ऑनलाइन बेच रहे हो, ये सब मतलब टैक्स फाइलिंग मतलब ये सब कैसे मतलब Chetan, I feel I'm asking because बहुत से लोग डरते हैं इन चीज़ों से. Chetan, if there is a will, there is a way. I think so. In last business, I was the courier boy on my own. I used to get orders. I used to deliver my orders on my own to people. I had no liberty to have a delivery boy that time. So ये आपको करना पड़ता है. और I think if it happens, मतलब you will find a way out. And there are a lot of if you have a willingness, you will find a lot of people who are ready to support. So आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हो कि तेरा CA बता कौन है, मेरे को CA का काम कराना है. अच्छा यार मैं कोरियर किससे भेजूँ, वो आपको कोई हेल्प कर देता है. सो यू नीड टू फाइंड योर वेज आउट, बट यू विल गेट इट. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स बाय द वे हेल्प मी आउट. एंड इफ मुझे ऐसा लगता है किसी के हेल्प के लिए जाओगे तो एवरीबडी इज विलिंग टू हेल्प यू. यू सेड मोबाइल कवर अभी फ्लैट है, इसमें ग्रोथ नहीं है, तो कुछ और करते हैं. एंड देन यू स्टार्टेड द वेरिएबल्स. So we always had an inclination towards devices as a space, but we never knew how to do it, to be honest, because it's more technology and it's more about understanding the consumer. And then you are thinking of fighting these big guys in town. How can you do that? Chetan, today Noise is way ahead than all Chinese brands. We are top 4 in the world. Noise is now largest brand in India also for wearable. The 1 out of 4 watch is a Noise smartwatch. On that day we never thought. तो आप ना सिर्फ स्मार्ट वॉचेस में, आप पूरी वॉचेस की बात कर रहे हो, घड़ियाँ? नहीं स्मार्ट वॉचेस इज द बिगर स्पेस नाउ देन नॉर्मल वॉचेस. Oh really? I didn't know. I mean yeah, so smart watches is actually normal watches are getting out of space. बहुत ही कम नीश हो गया है. बहुत नीश हो गया है. तो ये स्मार्ट वॉचेस like your smart watches, tell me something now. Smart watch is not exactly mobile covers. This is a high tech product. Yeah. Something that says, some would say it's got more technology than even a computer or a phone. Yeah. Because it is detecting your body, it is detecting motion, it is detecting so many things. तो ये कैसे मतलब आपने बनाया है? Like how did you say कि ये करना है? चेतन उस समय सिर्फ स्टेप्स होते थे. अब तो इवॉल्व होके वी स्टार्ट टॉकिंग. आई विल डिस्कस विद यू नेक्स्ट. वी ट्रैक लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, बट दैट टाइम यू स्टार्ट टेकिंग हेल्प. वी वांटेड टू डू इट. देयर वाज अ पैशन इनसाइड एंड वी स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स. समबडी इंजीनियर की यार, हाउ डू आई डू अ एल्गोरिथम बेटर, हाउ डू आई make the build better, how do I make the design better. We had a will and we found our ways how to do it. And by the way, there were a lot of challenges, Chetan, when we did. So first batch of devices what we got, वो है ना गाड़ी में ड्राइव करते करते ही स्टेप बढ़ जाते थे. इमेजिन करो आप यहाँ से घर पहुँच रहे हो, 5 स्टेप हो गए. हाँ. So we have seen those times where we had our set of failures, our set. मतलब the watch didn't work properly. Then people used to complain ये क्या बकवास है. Yeah. We had to call back everything from the market. It's still lying in my warehouse. वो बहुत पुरानी घड़ियाँ अभी तक पड़ी हैं.
So I mean, we had our share How of many like I think batch got failed maybe 5,000, 6,000 odd units, something we had to face. so you have been like this, it doesn't go smooth, like basically what you trying to tell me is कि मतलब आपने मोबाइल कवर भी चालू किया, सक्सेस भी आया पर वो भी रुक गया, फिर कुछ और ट्राई किया उसमें रिकॉल्स आ गए, मतलब इट्स डजंट लाइक लाइफ में प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप. So Chetan, when we started doing it, when market started becoming big, people started telling us, we will not let you survive. Wow. I mean, who are you? How can you lead the market? When we started picking up that time, I mean, we started taking off as a journey, as a brand. People said us, no, we are the market leaders and nobody can sustain. So we started taking baby steps. हमने कहा ठीक है यार, we respect you and we never. And why we did watches also, Chetan, because हमारे पास इतना पैसा कभी नहीं था marketing के लिए. Because mobile brands have big monies to market. So we always thought that you need to come up with a differentiated offering in the market. Yeah. You can't have. I was reading that book called Purple Cow. Okay. So it's about you need to find that differentiated cow which everybody looks at it. So we said, okay, I need to enter your house. How I enter? Let me enter in an area where nobody is focused right now. And quarter after quarter, we became so big that everybody's clueless how it happened. And now we are in the list of all companies like Xiaomi, Realme, all these brands. We are in the Amazfit, OnePlus. We are in the bucket list here how Noise did it. In a lot of Samsung internal meetings, our name comes now. Ki how Noise has built it. Look at them. Wow. What is success to you? And what do you think it takes to be successful? I think success for me is a meaning where you feel content from inside. I mean, monetary things can't give you always happiness. So it's if you're content, if you feel that you have done good in life, that's more a success. Are you content? I'm not content, honestly, because as entrepreneur, I am hungry. I need to keep going. Now the ambitions are way bigger. But you are successful. I think there's a long way for us to go. Oh, really? I mean, we have just nailed the surface. Wow. आपने money का बोला, बार बार बोला आपने इस podcast में, money doesn't excite me. Money is not what it makes you success. Money is not the measure of happiness or success. What is money to you? Because now you do have money and a lot of people look at you for money. Like in the sense like look at you as somebody who made a lot of money. And पैसे के पीछे हम सब लोग जब छोटे होते हैं हम यही सोचते हैं यार पैसे हो जाएंगे तो हम सब लाइफ में और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम खुश हो जाएंगे, मज़े आ गए, लोटेंगे गद्दों पे फिर. I think money definition has changed now for me. I think money gives you freedom to pursue your dreams. And I think with money, for me, money is, I can pursue my passion. I can build whatever I want. That is freedom. Money gives you freedom. What is happiness to you? Yes. So I feel a little content now when I see people wearing a Noise watch. Like I was in your office today and they said me ki a lot of my friends and family use a Noise product. That gives me more happiness. And we want what will give me more happiness is how can I be more meaningful as a brand to these guys? I mean, can I give more health insights to them? Can I make their life more meaningful, more better, more active? Okay. So the impact you're having. Yeah, that gives me more happiness, and money is definitely a byproduct of it. Okay. What is career? We spoke a lot about actually. So you've spoken about growth and you want to keep growing. Let's talk about health. You said you're a fitness freak. Before the podcast, you were talking about not only the fitness but also the biohacking and stuff like that. So since I thought it's interesting, since I have you, उस बारे में बात करें. तो fitness का when did you get into fitness? What is your fitness routine? And what is fitness according to you? Exercise, diet, supplements. Let's talk about how you approach it. So I'm an enthusiast, not a Greek. Not a bodybuilder. Yes, we know. So the kind of space I am in wearables, it pushes me also towards it. That's why I enjoy it more because wearables is more health. So of late, till 35 I used to work. I'm 41 right now, and till 35 I used to eat, drink, whatever you used to do. And your body takes it. फर्क नहीं पड़ता. But I realized that it's getting out of shape, and what is more? What will you do with money if you don't live long and healthy? So longevity is very important. It's just not living long and healthy. And then I started maybe 3 years back. I started really before COVID, a year before COVID, I started really working on my health. So I get up early at 6:30. I do some kind of sport or a workout or a run. I spend 1 hour there. Now I'm a little lazy, but I do that. And I do mindful eating. I eat a lot.
but I know what I'm eating now. I like. What do you avoid? What do you eat? What do you indulge in? But Chetan, it's a भुजिया तो गई अभी मेरे को लगता है. हाँ, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता, but Chetan, I realize it. Like I used to eat a lot before. I mean, वो packed healthy foods, but all is junk. All is junk. Like I grew give up examples because people should know. You don't have to mention brands, but you can tell the products. but like I used to eat Parle-G a lot. Then I realized it's 40% sugar. That's why it gives you a high. You eat. You actually thought Parle-G is healthy? Not healthy, but I used to eat a lot. हाँ. I used to like it. Because India's world's highest selling biscuit. So when you eat Parle-G, it gives you a high. I used to eat a lot of packed foods. Then I realized it's made in palm oil. Bloody doesn't. It's more killing. So I avoid sugar. You avoid anything that comes in a packet. Yes now. I used to drink a lot of packed juices before. Then it was healthy for me. Because वो लिखते हैं उस पे. Healthy लिखते थे, but then I realized it's bad. Horrible. They're horrible. I mean, I can just say it. They're from the point of view of health. Taste-wise, they're not horrible. Taste-wise, they're nice because they are fruit-flavored sugar. Basically. Yeah, anything fresh is fine. You eat anything fresh is fine. But fresh means food. किसी ने मेरे को बोला था food that goes rotten. खाना जो खराब हो जाए. Correct. वो fresh है. Correct. Because they say fresh on the packet also. Yeah. But it's not fresh. You said it right. खाना जो खराब हो जाए. So we should eat that food which could खराब हो जाए. Rotten. The food that goes rotten. So coming back, health for me is पहले health की definition थी looking good. So health is just not looking good. It's overall what you call wellness. It's mental wellness is very important. Your family relationship is very important. So 360-degree there has to be balance. What is mental wellness according to you, and when did you find कि ये mental wellness का issue, because it's a very important issue and I'm also been exploring it a lot, and maybe COVID में मैंने अपने आप को काफ़ी change किया, not only physical fitness but mental fitness also, which include, so for example sleep I think is a very important part of mental fitness. And what is mental wellness according to you? So we all I can give you some stats also. So first of all, we spend 33% of our life in sleep. एंड चेतन, हमें ये बताया गया था कि आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे. प्रॉब्लम है कि जब आपको 5 स्लीप की साइकिल होती है बेसिकली 1.5 घंटे की एक, वेर यू गो टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप. वो 5 साइकिल नॉर्मली एक आम आदमी को करनी ज़रूरी है. वो नहीं करोगे तो आपकी स्लीप में बॉडी रिकवर होती है. बॉडी रिकवर इसलिए होती है ताकि आपकी मेमोरी अच्छी रहे, आप दिन भर जो स्ट्रेस लेते हो पूरा. और हमें सिखाया गया था कि नहीं, आप जितना ज़्यादा what do you call, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे या वर्क करोगे, that will be good. So sleep is very important, and we all of us going through very strong stress every day because of work, because of personal life. So you need that mental detox also. Maybe phone is also a stress because it throws reaction. When you read a message, you tend to react to it. So overall, the kind of stress we all are living in, we need to spend 30 minutes or so, which meditation is I think it really helps. I'm not able to do it. मतलब मेरे 2 मिनट भी नहीं कर पाता मैं. It's hard. It's a meditation very hard. But people say even 9-10 minutes has a lot of benefits. You should do it. I mean, yoga is important. I realize breathing exercise is super key. जो लोग देख रहे हैं, young persons of India, what do you have to say to them? उनके भी मन में सपने हैं. They also want to become something in life. उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है. शायद वो बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहोगे? I think, Chetan, you need to, if you want to do something, you need to continuously, persistently do it. You can't give up. I mean, I also come from a place where I was also clueless, by the way. I was clueless for good 5 years. But I kept going. I was not sure that was my journey I wanted to go, but I kept going. There were a lot of problems, like I said. No food, no clothes, sleepless nights, but end of the day you need to passion से आपको pursue करना पड़ेगा, and definitely there is a way out for it, and you should do honestly something what you love, because that keeps you driving. This was wonderful talking to you, and I can't thank you enough for coming, for doing this. I think I have asked you most of the questions, and there can always be more, but we've been talking for a while. I've already taken a lot of your time. I hope you enjoyed. No, it was fun interacting, Chetan, with you, and thank you for having me here. And may noise grow and grow, and may noise make a lot of noise. Thank you so much. Thank you guys. That was Deep Talk with Amit Khatri, co-founder of Noise. Thank you for watching. Take care.